So in this video we are going to discuss one problem from optics. This is a question from IIT JEE and the question is as follows. In the Young's double slit experiment, using a monochromatic light of wavelength lambda, the path difference corresponding to any point having half the peak intensity is. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे अपने पास एक यहाँ पे अपने पास डबल स्लिट है, यंग्स डबल स्लिट, और यहाँ से लाइट जा रही है और यहाँ से लाइट जा रही है और यहाँ पे स्क्रीन है। तो जनरली अपने पास क्या होता है, दस यहाँ पे बीच में सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है और यहाँ पे डार्क, यहाँ पे ब्राइट, यहाँ पे डार्क, लाइकवाइज यहाँ पे डार्क, यहाँ पे ब्राइट, यहाँ पे डार्क। तो जहाँ पे ब्राइट होता है वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमम होती है और यहाँ पे इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाती है। ऐसे कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे इंटेंसिटी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं भी ये दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पे तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इंटेंसिटी जो होगी वो आई मैक्स बाई टू होगी, और ये दो पॉइंट्स के बीच में, इसके और इसके बीच में भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इंटेंसिटी होगी आई मैक्स बाई टू, आई मैक्स बाई टू। तो ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट विल द पाथ डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स हैविंग हाफ द पीक इंटेंसिटी। तो ऐसा क्वेश्चन है। नाउ वी विल हैव टू डू सम डेरिवेशन एंड अराइव एट द फाइनल आंसर। तो सबसे पहले अपन पूछेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए। तो यहाँ पे अपने पास एक फॉर्मूला है विच इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विच इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. So this is the resultant amplitude of two waves interfering, having amplitude a1 a2 and the phase difference is phi. अभी ये फॉर्मूला से हम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। दैट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इसको अपन नाम दे देते हैं आई डैश इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos phi। और यही इक्वेशन हम यूज करने वाले, ये फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। दिस इक्वेशन बिकम्स I dash इज इक्वल टू I प्लस 2I स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट है तो I स्क्वायर नहीं आएगा, 2I आएगा cos phi। So this is 2I plus 2I cos phi. So I dash is equal to 2I 1 plus cos phi. So now we will have to find कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो कब होती है। So what I will do is I will substitute I is equal to I max. So for maximum intensity you will have phi is equal to 0. If phi is equal to 0, we have I dash, सॉरी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, 2I 1 प्लस cos 0। So 2I into 1 plus 1
is equal to 4I. So I dash is equal to 4I. So this is the maximum intensity. Okay, I max is equal to 4I. So we are interested in I max by 2. We are not interested in I max. So I max by 2 कितना होगा? I max by 2 will be 4I by 2, which is equal to 2I. So इतना इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, तो आई डैश को 2I लिखना पड़ेगा। कौन से इक्वेशन में? ये वाले इक्वेशन में। और फिर फाई के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कौन से फाई के लिए आई डैश 2I के बराबर होता है, विच इज मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय 2। सो वी सब्स्टिट्यूट आई डैश इज इक्वल टू 2I इज इक्वल टू 2I 1 प्लस कॉस फाई, और यहाँ पे वी गेट 1 is equal to 1 plus cos phi, and then we can solve for phi. Cos phi is equal to 0. So phi is equal to pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, etc. तो ये सारे फेज डिफरेंसेस के लिए जो इंटेंसिटी होगी वो आई मैक्स बाई 2 होगी। But the question is not what is the phase difference. The question is what is the path difference. So what will be the path difference corresponding to this, this, and this? So let the path difference be x1 for this, x2 for this, x3 for this. Now what is the general formula for path difference? Path difference का general formula है ये। अगर 2 पाई फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। तो अगर फेज डिफरेंस फाई है तो पाथ डिफरेंस इज एक्स, वी डोंट नो, एंड वी राइट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई into phi. So this is the path difference if the phase difference is phi. So what is the path difference if the phase difference is pi by 2? So x1 will be lambda by 2 pi, और यहाँ पे होगा pi by 2, which is lambda by 4. तो ये है lambda by 4. Next x2 is lambda by 2 pi, और phi की जगह पे 3 pi by 2, which gives us 3 lambda by 4. तो ये हो गया 3 lambda by 4. x3 is lambda by 2 pi, which is lambda by 2 pi into phi is 5 pi by 2. Pi cancels and you have 5 lambda by 4. So 5 lambda by 4. So these are the path differences for which the interfering waves get I max by 2 as the resultant intensity. तो ये path difference ऐसा है, so I can say that this is the odd multiple of lambda by 4, and the odd multiple of lambda by 4 in the given options is this option number B. Everything else is an odd multiple of lambda by some other fraction of lambda. Lambda by 4 is option number B. So the correct option is B. Correct option is B. So this is how we can solve this problem. I hope this video was helpful, and I thank you for watching.